Tutu Pattnaik, a luminary in the realm of sculpture, achieved acclaim early, earning a gold medal in BFA from Benaras Hindu University before mastering his craft at College of Art for his MFA. His journey of artistic exploration led him across continents, showcasing his brilliance in Paris, Brussels, Frankfurt, and beyond, enriching global audiences with his transcendent creations. Awards like AIFACS, Vice Chancellor Delhi University, and Gandharv Samman adorn his illustrious career. His sculptures grace esteemed collections such as the National Gallery of Modern Art and Sahitya Parishad, symbolizing his indelible mark on the artistic landscape. Through commissioned works, he harmonizes with government bodies and corporate entities, fostering a legacy of artistic excellence intertwined with societal resonance. Give us all your love and support by subscribing to this channel. In this episode of Chaibrary, let us have a good and a very nice conversation with an eminent sculptor, Tutu Pattnaik. Tutu Pattnaik ji, welcome to Chaibrary's, and it is very nice to have you here. Let's hope to give a heartful conversation to all our viewers and make Chaibrary the best channel. Thank you, Kiran. I'm quite thankful. It's a pleasure to be here, giving me this chance, this platform to express my work, express my feelings through your this platform. So in this long journey, you have been acclaimed by lots of awards, lots of recognitions. People have seen your work. और आपका काम तो कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता. It is larger than life. You work on such mammoth-size sculpting and sculptures. So हम लोग तो इग्नोर नहीं कर सकते आपका वो. But we have read about your recognitions, your work. I believe you were on a residency to France, and that has been the longest residency that you've had. Tell us something more about this residency. And another thing that I would want to know from you is, why is it called a symposium? आपकी जो भी residencies हुए या जो भी I think sculptors also you have put the name as Symposium 1, Symposium 2, Symposium 3. So let's begin with France today first. So it was 2009. I got this chance to go abroad. It was 2009. This residency, the name is Lapidal. Lapidal used to actually that place particularly I'm talking about. It's south of France. It's about 400 kilometers from Paris. So that stone, that it's a quarry. It's a stone quarry. In fact, it was last carved in, excavated in 1948. Actually, you must be knowing this Statue of Liberty. That's right. That platform of the Statue of Liberty was from this place, from actually. This, the stone was from this made place. From that stone, yeah. So it was a mountain. It's a calcaire kind of stone, a little bit harder than this limestone, harder limestone you can say. It was in 2000 actually, government with the collaboration with NGO, they just opened, they completely cleaned that place, the mountain surface, and they used to call 6 sculptors every year. I see. To stay there for, of course, it's a longer time, it's 2 months. And carve these sculptures with stone and your expression. Mm-hmm. They have some subject, concept also, but you are free to... So you had the liberty to do it the way... Yeah, I sent 2 drawings, so they accepted 1. Yeah. So, the thing is that the condition of this residency was to work with traditional tools, with the hand only, no electrical tools, nothing allowed. Yeah. So it was, of course, it was completely challenging job to work, and my
piece is 24 feet by 11 feet. I remember the whole mountain But surface as was. big as a mountain only. Yeah, that is the part of mountain. Yeah. So it was 30 feet by around 12 feet. I mean, the space was there. So I composed that way. And I took 24 feet by 11 feet to carve this place. And with the hand tools, chisel and hammer, you can say this only. There's some peak to put texture. So I must say the condition is quite cool that time. So I mean, in a day you can get rain, and after some time again sun, again rain, like this. Okay. So the surface of 2 6 inches is completely like iron. When you carve, the stone is just rebound actually. So it was after 6 inches, then I went through. Okay. It was little bit softer. Okay, I went through around 2.5 feet inside, and with the hand, that is It's very I'm yeah. sure they must be using some kind of machines and all. No machine, no, But not for allowed. you, I mean, they Not for devised everyone. only by hand. It's for everyone. That condition was that you have to work with a hand only. No. But आपके लिए तो challenging जरूर होगा, but it must have been something that you enjoyed, because what I've known about you is you want to preserve the Indian culture and our heritage. And most of what we see in your sculptures, which are these huge sculptures, is that you have used your manuscripts in it. I have also observed the use of these pins that are there. Yeah, there is a message. Tell us more about why stone. आपने stone as a medium क्यों choose किया? That means जो already broken हमारी culture हो चुका है, या हमारी जो heritage है, sculptural heritage है, जो भी वो कहीं ना कहीं deteriorate करता है. Yeah, this is, I must say, about my inspiration, my influence, you can say inspiration. It's all about my ma and mati, my mother and my soil. I am from Bhubaneswar, and you must be knowing actually this the city of temples, you can say. Around me, my home, there are Mukteswar temple, the historical Mukteswar temple, Lingaraj temple, Rajarani temple, Brahmeshwar. There are so many temples around my Nageswar temple. So I have played with this kind of surroundings actually, with the stones, the broken stones, the demolished, I mean the fragmented stone pieces. I sit over there when we were playing cricket and kind of games actually used to play. So I grown up with these stones, fragmented stones around me. So this is and my mother, as I told you, my mother was my first inspiration, and she has a very good hand. I remember when I was a child, so she used to check my drawings and correct my traits. So it was my first. It's in your genes also, so that creativity and that was true. in genes. That's and true. You happen to be around temples. You happen to be. आपने एक बार मुझे बताया था कि आप उस लेन में रहते थे जहाँ पे there were a lot of stone cutters. तो जैसे bells temple में ring करती थी, वैसे this became like a constant vibration for you, and तब वो generated into energy. That's true. When I was going to my school,
child, third, fourth standard, with a bag. On the way, there are so many traditional carvers and restorer, you can say. They renovate the temples, some carving kind of thing actually they used to do. So it was, I mean, that the bell of chisel and hammer, this particular, the sound is very familiar to me from that time. Actually, I was very much used to with this sound. It's still I can hear this sound. So it's lived with you all these many years. Yeah, from my childhood I'm talking about. As I told you, this my home is just surrounded by the temples. These old classical temples of Odisha. Coming back to my question, why stone? My family is completely science background. My papa, my brothers, sisters. But I was something different from my family. So I wanted to be something different, not like my papa was interested to go with this engineering line. But I don't know why. Maybe the destiny, the God knows everything. So as I told you, this the place actually big inspiration, big. It was a big push and a start. From the beginning, actually, that was the part of my. Because the works also जो हम देखते हैं आपके marble sculptures में और उसमें more temple-driven muses and temple-driven these things. You said you were drawing also because just before we met, Abhi, we just saw a few sets of your drawing. आप talk about your work कि आप उसको कैसे, what is the process that you follow? So I would like to visit France again to you after we finish speaking about your Indian stay here and how you work here. How much time does it take? आप कैसे draw करने के बाद आप उसको models बनाते हैं? क्योंकि they are like huge works. I love to do bigger because I am student of Professor Balbir Singh Khat. When I came to Benaras BHU, and he was my inspiration, actually, all-time inspiration. So he was known for bigger stone, and that time also I was 4 feet, 4.5 feet, 5 feet, this much of size I was used to carve. But whenever I look at his sculptures, it was, of course, डर तो लगता था, but still confidence वहीं से आया, wherever, I mean. So it was his mentoring, basically. Yes. और मुझे ये भी पता लगा आपके बारे में कि जब आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ज्वाइन किया था, तब यहाँ पे स्टोन का कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं. नहीं, स्टोन एक्चुअल डिपार्टमेंट नहीं होता है, इनकी स्कल्पचर्स का एक मटेरियल है स्कल्पचर डिपार्टमेंट का. बट इन इंडिया देयर इज the institutions, these colleges actually known for some material. Like BHU always known for stone. And that mainly due to Balbir Singh Khat, my professor. So that's what you carried. And like Baroda is like mixed media kind of thing. And Calcutta, Bengal, Santiniketan is for metal, terracotta, modeling kind of thing. Banaras is specially for with the stone. These specializations of terracotta in Calcutta and all, and Baroda has mixed media. That is the reflection of because of the availability of the media? Exactly, that is the Bankuda. That is due to the Bankuda and Bankuda horses. Kumar told that they are the good modelers actually. Maybe the traditional Durga Murti, like for this type of things used to do, but they are good modelers. And sculpture is something about to sculpt, to carve out. Modeling, when you add the things actually with the clay and kind of thing. Okay, so I am more comfortable with carving, to carve out the extra part of the stones to make my sculptures. Like once Michelangelo had said that, if you leave a stone to an artist, it is for the artist to discover and get out the soul of the stone. तो आप कैसे काम करते हैं, मुझे ये देखना है, because I want to understand this very well, because climatic conditions होती हैं, आप outdoor काम करते हैं, तो how do you begin? What are your basic steps that you this is not more for me, but it is for the audiences who will be watching this
and who would want to know personally from you कि आप क्या process follow करते हैं, and how challenging it is, how difficult it is, how easy it is. See, it's all about nature. The stone is a part of nature. I love nature. Like everybody, mostly artists loves nature. So my surrounding, as I told you, the Khandagiri, Udaygiri, this last century, 2000, first century before third century, like this Dhaulagiri, Dhauli we say, and those are historical, caves. Yeah. So the surroundings actually used to, when I was a child, actually used to go to that place, sit, and I am quite good observe the thing. Quite interested to feel the things, feel the surroundings, and feel the sand, water, sky, this green patches, everything actually. So when you are confronting with the stone kind of thing, actually, this is the part of nature. So maybe the material suits you as to everybody. That depends upon my character, you can say. A personality. So, personality, you can say. I love stones. Of course, there are other materials I do, and but the first material is stone. I love to carve the things. In stones, variety of stones, whatever this marble or sandstone or granite and diorite, this basalt, this andesite. So which is your favorite stone that you like? So as you told me, my sculptures very much related to the Indian classical, mostly heritage kind of things. It's broken part, the broken pillars, there's lintels. Yeah. Cave, these things actually. So that relate to the history, the old time. So my sculptures mostly tell about the history. I love history. That's why my sculptures used to impose the things actually inside these stones. So the historical temples in Orissa, Konark, like this, there is sandstone. Okay. So sandstone, so I love sandstone more than marble and granite. But when you started to go out of the India, so most of the time I get this marble and granite, like what is sandstone very less. So France में जो query था जिसपे आप जो residency पे गए थे, what was that stone? Kalkayar, a kind of harder limestone, you can say. Okay, it's a limestone. But is it easy to work on it? Is it easy to chisel on it, or it is difficult? Yes. But I told you that this was a very old stone, old mountain. Density ज़्यादा होती है. So density and this particles very tight. Very tight. So that condition actually, when you go through actually the surface slowly, it is softer. But at the beginning, yeah, very hard. So when they give you these concepts, you improvise it or you express it in your Indian version of the heritage that you that France sees or Germany sees or Portugal sees. How is it? See, wherever I go, I try to express myself because I am Indian. You can say from Odisha. So my blood is like this. My soil is Indian. So it must tell about my culture, my blood, my everything. My nature, everything. I want to put my everything Indianity, you can say, my culture into that stones actually. वो हमारे लिए और आपके लिए एक representation हो जाता है in foreign countries, so they can really relate to it that this is India or this sculptor must be from India. That I came to identify myself actually when I started to read me myself. So when I went abroad actually, वहाँ मुझे अपनी identity मुझे दिखाई दिया. Then because see, we are all Indian over here, okay? So जो भी हम करते हैं तो naturally आपका इंडिया, तो हमको differentiate नहीं कर सकते. मेरी ठीक है, मेरी अपनी place है, मैं उड़ीसा से हूँ,
कोई दिल्ली से या कोई यूपी से या समवेयर, वो हम छोटा सा डिफरेंशिएशन कोई ऐसे, बट व्हेन यू गो अब्रॉड एक्चुअली, तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, दैट कॉन्टिनेंट डिफरेंट हो जाता है। सो वो लोग देखते हैं ये एशिया से कौन आया, देन आई एम रिप्रेजेंटिंग इन एशिया, नॉट ओनली इंडिया, एशिया, लाइक अफ्रीका, अमेरिका, लाइक उस वहाँ पे उस टाइप का ये देखते हैं जब एशियन, साउदर्न एशिया या ईस्टर्न एशिया वगैरह। बट वो इम्पोर्टेंट है कि एशिया का कौन सी पार्ट से आया, एंड उसमें फिर इंडिया, देन बट बिकॉज वन थिंग आई मस्ट से, हमारी जो स्टडी प्रैक्टिस मोस्टली वेस्टर्नाइज्ड है। ये जो फिगर स्टडी करना है, जो हम लोग स्टडी करते हैं, फिगर को, मॉडल को बैठा के स्टडी करना होता है, दैट डज नॉट मीन कि ये खाली जब ब्रिटिशर्स आए या फ्रेंच आए, तो जब मॉडल स्टडी जो स्कूल्स एस्टैब्लिश किया गया उस टाइम, तो सेम वे जो वेस्टर्न स्टाइल में होता था, तो फिगर को बीच में रख के मॉडल को लेके अराउंड हम ड्राइंग करते थे, स्केच करते थे। बट एक्चुअली वो लोग इंट्रोड्यूस किए जब वेस्टर्न आए, रोमन या जो भी ग्रीक स्टाइल, ग्रीक रोमन जो स्टाइल है, वो तो वही, दे आर रियलिज्म एक्चुअली, दे फॉलो रियलिज्म। दैट डज नॉट मीन कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट में कोई, हमारी स्कल्पचर्स में रियलिज्म नहीं है, बट दैट इज आइडियलिस्टिक रियलिज्म। कैसे इट हैज ए प्रॉपर स्टाइल आउट फ्रॉम द फिगर, बट लाइक उड़ीसा स्टाइल ऑफ फिगर डिफरेंट, चंडेला डायनेस्टी, खजुराहो डिफरेंट, साउदर्न का डिफरेंट, बट फिगर इज फिगर फ्रॉम द ह्यूमन फिगर। कोणार्क में उसकी अपनी फिगर का अपने एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी, बट डिफरेंट वे, उनका ओन स्टाइल है। लेकिन वेस्टर्न के हम लोग इन्फ्लुएंस होके ज़्यादातर के कि हम जो वेस्ट में चल रहे हैं हम उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मेरी आइडेंटिटी में कैसे ये मतलब मैं अपने को नोटिस किया, मैं जब जा रहा हूँ अब्रॉड में, ब्रॉडर सेंस में, अगर मैं अपने को स्टडी करूँ, मैं अगर यहाँ से मैं जाके मैं हेनरी मूर या रंकुसी, एप्स्टीन या जो भी मास्टर्स है, तो उनके स्टाइल को मैं अगर वहाँ करूँ, तो मुझे क्यों बुलाएंगे? इतने यूरोप से मुझे इंडिया से लेके जाएंगे, एक हेनरी मूर के स्कल्पचर करना है। तो ये स्टडी, ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं मुझे अगर इंडिया से, तो कुछ तो इसमें से इंडियनिटी फील हो, जो ये बिना देखे इम्पोर्टेंट नहीं। मैं जब अब्रॉड में काम करता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं जो आई एम टुटू पट्टनायक फ्रॉम इंडिया, इम्पोर्टेंट है कि मेरा स्कल्पचर शुड टेल अबाउट दिस, नॉट मी। स्कल्पचर्स, हाँ, स्कल्पचर्स वर्क से अगर वो आइडेंटिफाई, मतलब वो आइडेंटिटी मिल रहा है, हाँ ये एशिया का उस पार्ट से, साउथ पार्ट से आया हुआ है, इंडिया से आया हुआ है, जो ये बाकी कंट्री, बाकी कॉन्टिनेंट से डिफरेंट है। तो इस इंडियननेस को आप कितनी कंट्रीज में ले जा चुके हैं? फ्रांस तो मुझे पता है, 18 अभी तक 18 कंट्रीज। अभी मुझे 3 कंट्रीज जाना है। अभी कोरिया है, ईरान है और एक होंडुरस। अभी इसी साल मेरा 3 है अभी होंडुरस। दिस इज अ वेरी कमेंडेबल अचीवमेंट आपके लिए कि इट्स ओके। काफी लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि आपने कहाँ अपने कल्चर्स को रिप्रेजेंट किया है। 18 कंट्रीज में कर चुका हूँ, एंड इट्स ए pleasure for me actually, because मेरे जो huge sculptures around, like this is 24 feet, काफ़ी 10 feet, 12 feet, 15 feet, 18 feet जो sculptures सब क्यों। and another thing actually, बाहर mostly काम अकेला करना होता है, no helper। आप जो भी 1 month 2 months है या 1.5 months का ये है, तो प्रोजेक्ट आपकी विजन, आपकी कंसेप्ट, आपकी ड्राइंग आपको रिफ्लेक्ट करना है। नो एक्सेप्ट आई मीन दिस क्रेन वगैरह होता है, वो हैंडल करने के लिए आप एक दिन में आप 5 times में अगर उसको टर्न करना है, दे कैन डू, बट nobody will touch your stone, you have to do everything yourself only। इवन काटने के बाद चिप्स जब जाता है, वो भी मॉर्निंग में हम खुद ही निकाल के साइड करना होता है, कोई हेल्पर नहीं कभी। तो दो sculptures I have done at 12 feet, 15 feet, myself only, no helper। We were also talking about vibrations and energies. Each time a chisel is hit on a hammer, it creates a vibration in you. That's what you had said. And वहाँ से आपका inspiration आता है,
वहां से आपका express you this medium and this vibration actually becomes like a soul for you. That is what you had told me. How would you like to express that in any of your works? Any particular work you want to talk about? जैसे आपका बुद्धा का एक था, I don't remember which country that's represented in. It looks like a broken relic kind of a thing. Yeah. So brokenness के बारे में तो आपने बताया कि क्योंकि आपने सारे reflection from my childhood memories, part of the history. Exactly. तो tell us about this broken relic. I mean, काम जो वाकई आपके सोल से निकल के फाइनली बाहर आता है. No, that was you must be knowing Bamiyan Buddha. Bamiyan, this Taliban broke in 2001. Yeah, they demolished this 54-meter stones. जो वो कुषाण पीरियड का जो ये था गंधार के डायनेस्टी. तो वो they demolished 2001. So in memory of that actually कोई एक रिएक्शन के ये में हम लोग शो किए थे दिल्ली में. And when I got this chance, that stone I met in Egypt, Aswan. Aswan granite काटना था. So I mean वो प्लेटफॉर्म में जाके ताकि हम लोग को कि जो डिमोलिश जो पेन है कि वो ठीक है अपनी इंडियन हिस्ट्री है वहाँ पे बुद्धिज्म का जो भी एरिया सारे डेवलप हुआ था गांधार स्टाइल. सो पेन को एक्सप्रेस करने के लिए बाहर जाके इंडिया में तो एग्जीबिशंस करना डिफरेंट थिंग में कर यहाँ पे उसके ये में ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे इंडिया में एग्जैक्टली उसी के बाद जब. लेकिन वो जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला इजिप्ट में मुस्लिम्स सारे वो तो मुझे वो चीज़ दिखाने का चांस मिला जो पेन फील है कि उसको मैं दिखाता. हम लोग घूम रहे थे अबू सिंबल या लक्सर में कहीं घूम रहे थे. उसमें मुझे कोई फ्रेंड दिखाया कि वो जो उसके मोन्यूमेंट के ऊपर क्रिश्चियंस आके वहाँ पे क्रश कार्व किए हुए हैं. सो मुझे बोल रहा था देखो क्रिश्चियंस आके कैसे मतलब वहाँ पे कार्व स्कल्पचर्स ऑलरेडी है उसमें कार्व करके अपनी क्रश. So I told the same pain what you are feeling, that is my sculpture. Yeah. So you were just attacking the other religion, other culture. So that was the expressions, the same thing as what you were feeling. That is the same expression what I am doing this one. So वही sculpture था बामियन के जो है उसी का reflection में the half part broken बुद्धा का पार्ट था और हाफ पार्ट है ऊपर एक लिंटल और मोस्टली अब बुद्धिस्ट सांची स्तूप के जो रेलिंग्स होता है खास करके वो मेरे स्कल्पचर में बहुत सारे यूज करता हूँ मैं. पिन मेरे एक बहुत बड़ा एलिमेंट है स्कल्पचर्स में. और अनदर थिंग आई मस्ट से मैं बुद्धा को करने के पीछे क्या रीजन है. बाहर कंट्री में मोस्टली यूरोप या उसमें देयर आर ओनली 2 पर्सन्स एक्चुअली जो वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं. वन इज बुद्धा एंड इज गांधी. आई सी. नो थर्ड पर्सन. वो कहीं किसी कंट्री में कोई अमिताभ बच्चन या कभी शाहरुख खान को जानते हैं या कभी मोदी जी को जानते होंगे. बट मोस्ट ऑफ द कंट्री 2 ही मेन कैरेक्टर है, 2 पर्सन्स है, बुद्धा एंड गांधी. थर्ड इतना नोन नहीं है, हर जगह नहीं जानते हैं. सो इट वाज मेरे लिए इजी होता है जो 2 आइकॉन्स है इंडियन आइकॉन्स है उनको मैं उनके थ्रू में कुछ एक्सप्रेस करने का चांस मिलता है तो मैं बिल्कुल पहले करता हूँ. Is there any kind of language you feel that you have been able to establish आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करना है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है? आप जिस तरीके से काम करते हैं उसमें यूज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, रेफरेंसेस ऑफ द ओल्ड टेम्पल स्कल्पचर्स हैं. ग्रोइंग फॉरवर्ड इन द प्रेजेंट दिस थिंग आई नो दैट यू आर वर्किंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यंग बच्चों का आप काम कर रहे हैं जिनमें आप देखते हैं कि पोटेंशियल है to take this legacy forward. How do you identify
who you want to work with, which child you want to take forward? I must tell one thing actually about आप जैसे बोल रहे ना मेरी जो लेटर्स मेरी क्यों आता है जो मेरे मैन्युस्क्रिप्ट्स आप यूज करते हैं। मेरे बचपन में मेरे टोटल फैमिली कायस्थ थे, तो हम लोग का जो जातक जिसको बोलते हैं, ओके, दिस हॉरोस्कोप हम लोग का पाम लीफ में बना हुआ है, वो कार्व होके लिखा हुआ है सारा। ओके ओके। सो मैं छोटा था, मुझे पढ़ने में तो नहीं आ रहा था कि उड़िया स्क्रिप्ट, बट वो डिफरेंट टाइप का उड़िया में मुझे अच्छा लगता था। समवेयर तो पिक्चर होता था, कुछ इलस्ट्रेशन एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन और इंस्क्रिप्शन से सारे, वो मुझे फैसिनेट करता था। मुझे क्या था, मुझे आर्टिस्ट बनना है या नहीं वो पता नहीं, मुझे अच्छा लगता था। मैं अपना हॉरोस्कोप खोल के मैं देखता था, पढ़ नहीं पाता था, बट वो अच्छा लगता था जो मेरा हॉरोस्कोप है। मैं सबके भी देखता था उसमें। वो फर्स्ट एक तरह इंस्पिरेशन मेरे राइटिंग में क्यों आता है। अनदर है कि आप धौलागिरी के बारे में जानते हैं, जहाँ पे द कलिंगा वॉर, द ग्रेट कलिंगा वॉर वाज फॉट ऑन दैट माउंटेन। अशोका के जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब वो कलिंगा वॉर में वो जीतने के बाद जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ही रोट, उनकी जो एडिक्ट है उस एक माउंटेन है उसी धौलागिरी के ऊपर, उसमें लिखा हुआ था। बचपन में मैं जाता था, वो पाली स्क्रिप्ट है, बट पढ़ने में तो नहीं आता था, बट मुझे अच्छा लगता था क्या लिखा हुआ है तो पता नहीं, बट इंस्क्रिप्शन मुझे बहुत पसंद था। आज के टाइम में तो उसको फिर भी एक तरफ बाउंड्री करके आप ये नहीं कर सकते, लेकिन मेरे टाइम में तो मैं उसको छुआ कुछ अभी जा नहीं सकते। एंड उसमें एक हाफ कार्व्ड एक एलिफेंट बना हुआ है, हाफ कार्व्ड है, तो जो भी बुद्धा को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैं कभी जाके उस हाथी पे बैठता था, वो मैं अपनी स्कूल की टाइम बता रहा हूँ। तो सामने पूरा कंप्लीटली लैंड, ग्रास लैंड वही है, सारे कल्टिवेटेड लैंड, सारे खेत जिसको बोलते हैं। तो मैं वहाँ पे अपने हाथी को अपने बैठ के मुझे अपने को अशोक समझता था मैं। ओके। तो मेरी फीलिंग था सब सारे लगता कि वो हिस्टोरिकल, मेरे घर से 7 किलोमीटर है उस पर्टिकुलर जो माउंटेन पे फाइटिंग हुआ था कलिंगा वॉर। तो वो उसमें इंस्क्रिप्शंस एक अनदर पार्ट ऑफ इंस्पिरेशन in my sculptures. So I used to write also. Sometimes in my sculpture there are some meaning, some stanza of sloka, some prayer, sometimes कविता, कुछ कहीं नहीं तो वर्ड्स में करता हूँ उड़िया, बट उड़िया स्क्रिप्ट, उड़ीसा स्क्रिप्ट है उड़िया की। और वो मेरे मैसेज, मेरे स्कल्पचर्स का एक पर्टिकुलर एक एलिमेंट है। मैं पिक्चर के साथ साथ जो भी स्कल्पचर्स के साथ साथ मैं एक राइटिंग पार्ट करता हूँ। एंड मोस्टली स्कल्पचर्स आर ब्रोकन, इनकम्प्लीट, मतलब मैं उस तरह में इसको शो करता हूँ ताकि मेरी जो बचपन का जो जिस एरिया में मैं इसको इन्फ्लुएंस, मुझे मतलब इंस्पिरेशन मिला है, तो मेरे स्कल्पचर्स ऑलमोस्ट हमेशा एक ब्रोकन पार्ट, मतलब अनफिनिश्ड फील होता है एक साइड में, ब्रोकन पार्ट, उसमें अदरवाइज कहीं की टेक्सचर देता हूँ मैं। और आई पुट ए टैग, स्टिच में करता हूँ हमेशा। जी, आप वो आयरन क्लिप्स यूज करते हैं? आयरन, मेटल, समटाइम्स कॉपर, समटाइम्स स्टील, मोस्टली ग्लॉसी नहीं, ओल्ड है। वो सारे टेम्पल्स को रिस्टोर करने के लिए मेरे घर के आसपास सारे टेम्पल्स में भी यही हुआ है। दो स्टोन्स कहीं ब्रोकन हुए तो उसमें वो टैग लगाते हैं। बट इट हैज अ मैसेज व्हेनेवर आई जस्ट पुट दिस टैग एवरीवेयर इन माय स्कल्पचर। सो द मैसेज इज आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन is deteriorating, okay? The influence of western the recent this the generation, the now generation, this young generation, they are more fascinated with western, okay? हमारा खाना भी चेंज हो गया, ड्रेस चेंज हो गया, everything चेंज हो चुका है, influence. So but this is the tag means the protection, the restoration. We being I mean not artist only, you can say being an Indian, we have duty to protect our culture. The tag means सिर्फ हमारे कपड़े अगर फट जाता है,
अनलेस हमें यूज करना है तो हम स्टिच करते हैं, अदरवाइज हमें नहीं यूज करना है तो फेंक देते हैं, इसको स्टिच नहीं करना होता है। दैट मीन्स जो ऑलरेडी ब्रोकन हमारी कल्चर हो चुका है या हमारी जो हेरिटेज है, स्कल्पचरल हेरिटेज है, जो भी, वो कहीं ना कहीं डिटोरेट कर रहा है जो। सो वी हैव द ड्यूटी टू पुट आई मीन टू रेस्टोर द थिंग्स एज टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर। सो दिस इज द मैसेज बिहाइंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू गिव माय थ्रू माय स्कल्पचर। Now coming back to the process of your working, जो हम आपसे पूछ रहे थे कि आप पहले स्केच करते हैं, आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं या खुद कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं, then you visualize it and then you put it as a drawing. Yeah, that's true. And I was very interested, जब मैं आपकी स्टूडियो आई थी तो वो मैगेट्स पड़े हुए थे जो आप मॉडल्स बनाते हैं छोटे छोटे, तो आई वाज वंडरिंग कि इतने बड़े बड़े आप स्कल्पचर्स क्रिएट करते हैं, फिर उसका रेप्लिकास कैसे रखते होंगे छोटे छोटे, आई मीन दिखाने के लिए भी। अब मुझे आपके देखने स्कल्पचर्स, तो मैं आपके साथ इजिप्ट नहीं जा सकती, जर्मनी नहीं जा सकती टू सी इट। सो हाउ डू यू कीप दोस रिप्रेजेंटेशंस छोटे छोटे आप बना के रखते हैं? मोस्टली मैं ड्राइंग्स बहुत करता हूँ जी। ड्राइंग्स एक्चुअली इज द फास्टेस्ट मटेरियल जो मेरी कंसेप्ट को कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, कहीं पे कंक्रीट मतलब बांधना है, तो इज द ओनली पेपर एंड पेन इज द फास्टेस्ट। मैं अपनी जो कंसेप्ट जो फीलिंग है इमीडिएटली मैं कहीं पे इसको बांध सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं। तो मैं ड्राइंग करता हूँ हमेशा, कहीं भी। आई मीन मेरी गाड़ी में भी पड़ा होगा, कहीं में अगर सडनली आया गाड़ी को शॉर्ट साइड करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि एक बार कंसेप्ट को अंदर जाने के बाद वो फिर मॉडिफाई हो रहा होता है अंदर। जो स्कल्पचर्स करने से पहले एक प्रोसेस है, ये इमीडिएटली स्कल्पचर्स नहीं कर सकते, ताकि उसको धीरे धीरे मेमोरी के अंदर वो मॉडिफाई कर रहा होता है, नहीं ये वाला एलिमेंट से यहाँ हटाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए। देन व्हेन आई बिकम थरो completed, then I start to the final drawing. So most of the sculptures मैं जब भी बाहर करता हूँ ड्राइंग को ही मैं भेजना होता है, ड्राइंग्स को भेजना होता है कि स्कल्पचर्स में लेके नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास जितने भी बैगेज में इतना स्पेस नहीं होता है, वो वेट भी नहीं होता है, तो मैं ड्राइंग्स को भेजता हूँ, ड्राइंग्स से ही मैं ज़्यादातर डेवलप करता हूँ। मैकेट्स जो है, मेरी मैकेट है से 2-2 फीट के तो मैकेट्स है मेरे, ताकि मेरे स्कल्पचर्स 10 फीट 12 फीट है, तो नेचुरली 2 फीट स्कल्पचर मेरे लिए मैकेट है, तो मैं इसको मैकेट मॉडल के हिसाब से यूज करता हूँ। तो उसमें आप वुड यूज करते हैं कि आप स्टोन ही यूज करते हैं? नहीं, स्टोन में नहीं करता हूँ मैं मैकेट्स में क्ले में करके इसको फाइबर ग्लास में कन्वर्ट करता हूँ, कभी प्लास्टर फाइबर में करता हूँ, ताकि मेरी फाइनल मटेरियल वुड बी आई मीन स्टोन। सो मुझे स्टोन एक छोटा सा एक स्टोन में अनदर काटना है, मैं फील नहीं करता हूँ। अनदर थिंग एक्चुअली मैं जब बड़ा करने लगा 10 फीट या 12 फीट 15 फीट, तो मेरे लिए छोटा करना वेरी डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा, छोटा मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा करना मैं जल्दी कर सकता हूँ, छोटा करने से पहले मैं बड़ा काट आराम से मैं कंफर्टेबल हूँ। हाँ, क्योंकि उसमें डिटेलिंग ज्यादा करना होता है, सेम डिटेल को छोटे में करना है, तो मुश्किल हो जाता होगा दिखाना भी और रिप्रेजेंट करना भी। तो उस स्कल्पचर्स को जब करना होता है उससे पहले मैं ड्राइंग डेफिनेटली करता हूँ। ड्राइंग के बाद कभी भी चाहिए होता है तो मॉडल में कन्वर्ट करता हूँ। सारे ड्राइंग्स को तो नहीं हो पाता है, तो जब मैं फाइनल सोचता हूँ फिर कभी मॉडल अपनी प्रैक्टिस के लिए स्पेस को देखना है, कौन सी एलिमेंट कितना एनलार्ज होना चाहिए, कितनी, वो प्रैक्टिस है, तो उसको मैं स्टूडियो में करता हूँ। उसको बाद में कभी जब मैं स्टोन काट के आ जाता हूँ बाहर से जाके, देन उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ कहीं पे किसी भी मटेरियल फाइबर या किसी में, कि मेजर काम मेरे सारे तो अब्रॉड में ही है, बड़े बड़े सारे जितने भी वर्क है, तो छोटा मेरे लिए मैकेट है, 2 फीट से मैकेट्स मॉडल्स हैं। While talking to you and discovering this, I feel you are a true Indian at heart, and you have very well worked and अपने काम के through you prove करा है that you're a Indian at heart, and you believe in brotherhood, you believe in peace, you believe in co-understanding,
coexisting of various, चाहे वो religion हो या people हो या human beings हो. जब आप बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, जो आपके साथ को-पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपके, उन लोगों का क्या वो होता है? बिकॉज लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होता होगा वहाँ पे, एंड हाउ डू यू ऑल कम्युनिकेट? वो लोग क्या? Of course, English is the only medium, only common language है. लेकिन बहुत सारे कंट्री में इंग्लिश भी नहीं जानते हैं जी. बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में वो फ्रेंड्स वो लोग इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं. बट हम लोग आर्टिस्ट है, स्कल्प्टर्स है, सो वी हैव अनदर लैंग्वेज. मेरी मटेरियल भी एक लैंग्वेज है जी. मैं इंग्लिश बोलूँ, हिंदी बोलूँ या उड़िया बोलूँ, बट मैं स्टोन में बोल रहा हूँ. सेम जो मेरी फीलिंग, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग समथिंग डिफरेंट मीडियम, तो मैं इस मीडियम में करता हूँ. ये मेरी लैंग्वेज है. तो जब एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कल्चर है, तो मेरे फ्रेंड्स में आप एक्सप्रेस लैंग्वेज में करो, मतलब आपकी इंग्लिश करो या करो, लेकिन भाषा तो ये है. मेरे लिए भाषा ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टोन है. तो इसके थ्रू में हम कम्युनिकेट क्लियरली करते हैं. कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है. आप लोग डू दे हेल्प यू डिस्कस, एनालाइज? आप लोग बिल्कुल मतलब एक दूसरे को करते हैं? बिकॉज आर्टिस्ट कम्युनिटी जो पहले थी, जब जे स्वामीनाथन जी थे, अदर को आर्टिस्ट मंजीत बाबा जी एंड ऑल, मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि आर्टिस्ट बोलते थे कि अगर तुम मेरे दोस्त का काम खरीदोगे तो मैं तुम्हें अपना काम बेचूंगा. सो दैट आर्टिस्ट कम्युनिटी, दैट भाईचारा amongst the artists, this thing, I just want to know if it is still present among, okay, let's see whether sculpting में है, sculptors में है ये चीज एक दूसरे के लिए, जब स्पेसिफिकली आप एक एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. मैं मुझे नहीं पता है इंडिया में मुझे कितने लोग जानते हैं. आई एम वेल नोन अर्नर, बट इन अब्रॉड मेरे फ्रेंड्स पर्टिकुलरली इसलिए तो आपको चाइबरी पे लाए ताकि लोग आपको जाने और इतना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग. थैंक यू. मेरे फ्रेंड सर्कल जो है बाहर ज़्यादा है, अब्रॉड में मेरे स्कल्पचर्स, एंड दे नो मी एंड थ्रू माय वर्क. बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है बाहर. सो आई फील कंफर्टेबल. मैं बाहर जितना मेरी सर्कल जितना अच्छे फ्रेंड्स है सारे बाहर. एंड जो एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं, मैं वही चीज़ मैं बाहर भी करता हूँ. जब मेरे फ्रेंड्स को आप अपनी सिम्पोजियम में चांस दो, देन अगर दोगे तो मैं भी आ रहा हूँ. So वो exactly जो अपना फील है. बहुत ऐसे बहुत मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बाहर चांस दे चुका हूँ प्लेटफॉर्म में, बाहर कंट्री में भेज चुका हूँ. तो वो एक इंटरेक्शन मेरा बाहर ज़्यादा है. बाकी इंडिया के अंदर क्या है कि जो भी ऐसे सर्कल है, बट मैं एग्जैक्टली जैसे बताया मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं इंडिया के अंदर, मुझे पता नहीं. बट आई हैव ए बेटर सर्कुलेशन international on the globe basically. अभी when we spoke about 2 months ago or something, आपका कुछ यहाँ पर दिल्ली के आसपास कुछ काम चल रहा था. कहाँ पे आप? ITM very recent last December जी. इन सिम्पोजियम था, इंटरनेशनल सिम्पोजियम ITM में ग्वालियर ITM यूनिवर्सिटी के अंदर. It was quite big sculpture in sandstone, red and yellow Jaisalmer stone and red Bharatpur की जो red sandstone. Awesome place है. अभी last December. बहुत recent है. That is one of your last December recent works. हाँ जी. The huge 15 feet by I mean is a kind of installation. वो total installation करीब 27 feet हो जाएगा. Height is about मेरे ख्याल से 16 फीट के आसपास है स्कल्पचर. तो आपको क्या लगता है कि we see sculptures around the city, we see sculptures और दूसरी cities में भी जाके, पर जो बनाता है उसको लोग जान नहीं पाते. आपको क्या लगता है कि हमें how can we reach, how can we bridge this gap? It's एक तो
platforms like these do help us. उसके अलावा क्यों पेंटर्स ज्यादा नोन हो जाते हैं, स्कल्प्टर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? very uncommon material, you can say, very hard material, very laborious material, stone. लेकिन मेरे लिए एक खुशी की बात, तो मैं प्राउड फील करता हूँ बिकॉज आई एम स्टोन स्कल्प्टर. ओके, वन थिंग, दिस इज द ओनली मटेरियल वर्ल्ड में एक्सप्रेशन करने के लिए, ये द ओनली मटेरियल जो आपसे मैं 10,000 ईयर्स के बाद भी ये मिल सकता है. ये स्कल्पचर टूट भी जाए इवन मिलेगा, एक्सकैवेशन से मिलेगा. नो अदर मटेरियल, नॉट इवन मेटल. मेटल भी अगर ग्राउंड में कभी इरोड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है अगर इस बाहर से. लेकिन स्टोन मिट्टी के अंदर जाके भी सही रहेगा, टूट सकता है लेकिन रहेगा. सो एटलीस्ट दैट वे मैं अपने को खुद ये फील करता हूँ that this is the only material. तो ये एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात 20,000 साल के बाद भी मिलेगा. करेक्ट, ये हमने तो सोचा नहीं था कि बिल्कुल the only material, कोई मटेरियल नहीं. Yes, not painting, not sculpture. That way actually मैं आज के लिए नहीं जी रहा हूँ ना, तो मैं जीना चाहता हूँ. मैं कुछ तो करके मैं जा रहा हूँ जी. मैं क्या इसमें मॉनिटरी सेक्शन या मॉनिटरी पार्ट है क्या, कितना है, उसको मैं इतना ये नोटिस नहीं करता हूँ. बट जो स्कल्पचर्स में लिख क्या, खाली इंडिया में नहीं, जैसे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कंट्री में मैं अपना नाम या मेरे स्कल्पचर्स दिया हूँ, एंड उड़िया लैंग्वेज भी इवन मैं जो इंस्क्राइब किया हूँ, तो कभी ना कभी स्टोरी में, हिस्ट्री में आएगा कि वहाँ पे वो यूरोप में वो उड़िया लैंग्वेज कैसे आया. जी. आज नहीं, बाद में. अभी तो लोग in the coming times I'm sure. As a teacher also, आप पढ़ाते भी हैं. What message would you like to give to the younger generation? I love students actually. मुझे स्टूडेंट बहुत पसंद है. मैं अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी भी लर्न कर रहा हूँ. कहीं ना कहीं मुझे सीखना है कहीं से कुछ भी. और मैं जब स्टूडेंट के साथ रहता हूँ मैं तो मुझे एनर्जी वहाँ से मिलता है. मैं जब छोटा था, यंग था, तो नेचुरली मेरे पास एनर्जी बहुत होता था. और मैं जब उनके साथ रहता हूँ तो एनर्जी वहाँ से लेना होता है. अब मेरी जो ब्रेन है उसको मतलब मैं अपने स्कल्पचर्स करने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों से. और मैं स्कूल्स में पढ़ाया हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट में भी, स्कूल्स में भी काफ़ी साल तक मैं रहा हूँ. तो बच्चे के थ्रू में मैं सोचता हूँ, मुझे मेरी प्रोफेसर बलबीर सिंह कट के जो दिया हुआ जो लेसन्स है, मेरे थ्रू में बच्चों के पास जाएगा. सो आई एम द मीडिएटर, कैरिंग द लेगेसी. तो आई एम द मीडिएटर ओनली. जो सर से सीखा हुआ है मैं बच्चों को दे रहा हूँ. सो मैं लाइक ए मैसेंजर. ओके, तो मैं चाहता हूँ बच्चों के पास पहुँचे. अगर मैं जो सीखा हूँ, जहाँ से सीखा हूँ, जैसे सीखा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो. तो मेरी हमेशा इंटेंशन हो रहता है. तो मुझे बच्चे पसंद है, स्टूडेंट्स को मैं कुछ ना कुछ इनकलकेट कर पाऊँ. करेक्ट. So I always try for that. So Tutu ji, we were talking about you having been mentored, or your inspiration that came in from Kat Sahab. आप बोल रहे थे कि आप legacy forward उसको लेना चाहते हैं. कैसे और क्या करना चाहते हैं आप, that you feel through your residencies that you arrange or you work with your students, जो आपके जहन में है, जो आप बोलना चाह रहे थे. So, आप कुछ बताइए. इनफैक्ट मैं लेगेसी की बात बता रहे हैं. अभी मैं जब बनारस में पढ़ रहा था, आई वॉज वेरी मच अटैच्ड विथ कट सर. मैं मोस्टली कॉलेज में क्लासेस में तो जो सीखा, लेकिन सर के साथ मैं माउंटेन पे बहुत क्वेरी में रह के काम किया हूँ. 2-3 क्वेरी में हम लोग रहे हैं जी. महीना वहाँ पे पत्थर काटते थे. सर का अपना बड़ा स्कल्पचर हो रहा था, मैं छोटा मोटा काट लेता था उसके साथ. बट आई यूज्ड टू, मैं एक्चुअली ऑब्जर्व करता था कि सर की एक्सप्रेशन कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से एलिमेंट्स लाते हैं, कहाँ से क्या इनकी, मतलब एवरीथिंग, नॉट ओनली अबाउट स्कल्पचर, उनकी टोटल कम्प्लीटली एक बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग, सब कुछ उस स्कल्पचर्स में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, वो मेरे लिए एक लेसन होता था हमेशा. मैं उसको
मतलब पास साथ में रह के मैं जितनी करीब रह के मैं सीखने का चांस मिला मुझे, तो आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट, बहुत फॉर्चुनेट था मैं उसके। अब मैं एग्जैक्टली जो लेगेसी की बात जो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करना है कि मैं अगर मैं जो मैं सर से या मैं जहाँ से भी सीखा हूँ उसको मैं अगर थ्रू स्टूडेंट्स उसको आगे मैं कुछ इनकलकेट कर पाऊँ उनके थ्रू में काम में, तो ताकि मेरी टीचर कम से कम एग्जिस्ट करे वहाँ पे, ताकि उनका तो वो एक्चुअली वे में जैसे पता है मैं एक मैसेंजर एग्जैक्टली थ्रू माय बैकग्राउंड। एंड मैं एक सर के नाम में एक मेरे स्टूडियो में एक रेसिडेंसी किया था जी। बनारस में जब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग के पास इलेक्ट्रिकल टूल्स नहीं, सब कुछ हाथ से करना होता था। इवन मैं उसके बाद मास्टर्स करने दिल्ली आया, दिल्ली में भी मैं मास्टर्स पास आउट करने तक मेरे पास कोई ग्राइंडर नहीं था, मैं हाथ से ही काटता था पत्थर। मेरे ख्याल से पास आउट करने के बाद मैं एक जॉब करने लगा तो मैं फर्स्ट ग्राइंडर खरीदा था 92 के आसपास, 91-92 में। मैं 90 में पास आउट किया था, मेरे पास तो ग्राइंडर नहीं था। बट दैट द प्रोसेस एक्चुअली जो स्टूडेंट होने के नाते जो ट्रेडिशनल प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस है, जैसे चीज़ों को चलाना है, स्टोन्स को हैंडल करना है, वो उनसे ही सीखा था। कि जो बेसिक जब आपके पास क्लियर होता है, कॉन्फिडेंस रहता है, जो तभी मैं जो फ्रांस में जो बड़ा एग्जैक्टली तो फाउंडेशन जब मैं माउंटेन जो काटने का मुझे चांस मिला फ्रांस में, अनलेस वो मेरी कॉन्फिडेंस मैं काट नहीं सकता था, ताकि मुझे पता था चीजल हैमर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे लाइन करना होता है, तो वहाँ पे भी वही करना था। देन इट वाज एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला जो सर से जो ट्रांसफर हुआ है मेरे अंदर, वो कॉन्फिडेंस, बड़ा दिखना, वो वे कोई करना सर से ही आया हुआ है। वो एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं स्टूडेंट्स के थ्रू में मैं चाहता था इनकलकेट, तो इसीलिए मैं एक रेजिडेंसी किया था स्टोन एज मेरे स्टूडियो के नाम पे, कट सर के डेडिकेटेड टू हिम स्टोन्स में बच्चों को दिया था। और कोई आपके पास इलेक्ट्रिकल टूल्स नहीं, हाथ से ही काटना है आपको। एंड वो तो रेसिडेंसी एक तरह काइंड ऑफ यू कैन से एक रेसिडेंस तो मैं गया था, वो एक तरह मेरी यू कैन से एक स्कूल हो गया था कि मैं बताने लग गया कि कैसे हैंडल किया जाता है चीज़, फ्लैट कैसे कर, मतलब सारे टूल्स का कैसे यूज किया जाता है, वो सारे एक तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। बट आई एंजॉयड अ लॉट, स्टूडेंट्स भी दैट वाज एन एविडेंस ऑफ कट साहब्स बेसिक्स आपके क्लियर थे, तो फाउंडेशन आपकी इतनी स्ट्रांग थी, तो यू वर एबल टू ट्रांसलेट दैट एंड टेक इट फॉरवर्ड। फेसबुक में अगर डाले तो बहुत स्टूडेंट्स इवन पास आउट करने के बाद भी स्टूडेंट्स का आने लगा मेरे पास, सर आप सेकंड वाला कब कर रहे हो, हम लोग आना चाहते हैं। मैं बोला नहीं, अभी तो मैं बिगिनिंग वाला तो स्टार्ट हो गया, मेरे पास स्पेस इतना नहीं है जी। तो काफ़ी यहाँ से थे, कुछ चंडीगढ़ से थे, पंजाब से थे, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया मिलिया, ऐसे करके मेरे को स्टूडेंट्स को लेके स्टार्ट किया था। एंड फर्दर मैं जब करूँगा सेकेंड टाइम, मुझे करने का है एक्चुअली सर का, तो मुझे एक्चुअली वो एक टाइम ऐसे हो गया था कि मैं ऑलमोस्ट सारे समर में मैं बाहर चला जाता था जी। उस टाइम में हर समर में मैं मोस्टली यूरोप में चला जाता था। तो उस टाइम में कुछ कैंसिल हो गया था, मतलब कुछ था उसको पोस्टपोन कर दिया, तो मैं था इंडिया में, तो मैं उस टाइम समर को यूज़ करने के लिए मैं अपने रेसिडेंसी कर लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सेकंड रेसिडेंसी जब करूँगा मैं और थोड़ा ब्रॉडर वे में मैं इसको करूँगा, बट वे वही रहेगा कि जो ट्रेडिशनल वे, जो बेसिक वे, उसको उसी के यूज़ करते हुए इसको करना है। तो मैं कुछ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट, उनको इनकलकेट करने के लिए, तो वे मैं कोशिश एक तरह में स्टेप्स लिया हूँ। एंड अगर ऊपर वाले का हाथ रहे, उनका अगर ब्लेसिंग रहे, तो मैं सेकंड टाइम डेफिनेटली करूँगा।
Definitely, we will all be looking forward to. I think जो बच्चे देखेंगे और जो लोग आज आपको सुन रहे होंगे, उनको जरूर मैसेज मिल गया होगा कि the second phase is going to happen very soon. We wish you luck for that, specifically, and I'm sure after watching this episode of Chaibrary, people will also come forward to make that dream of yours come Looking true. forward also. So, how do you feel this platform is? आप ये experience कैसा था और आपको क्या लगता है about Chaibrary? It's a great experience. Of course, I have been, in like this platform, actually, so many countries also I have talked, given this talk, kind of thing. But this Chaibrary coming to this platform, and I'm very much happy. Actually, you are giving, making this kind of program to promote the artist, the established artist, and the art fraternity, you can say. And this will be definitely as a research kind of thing for the further generation, future generation. It will be a big platform through yourself only with this interview kind of thing this year. So it will be for the betterment of the art world, for the art world. You are doing a very nice job, and I am really fortunate to be part of this show. I have seen so many episodes through this YouTube yeah. But of course, I was waiting when I'll get chance. So, and this is here. Some fact of my life to you. Thank you. Thank you so much. Oh, it was good having you over the show, and thank you so much, and all the very best for the future. Thank you. So we thank you all viewers for being with us and watching this episode with Tutu Pattnaik. I hope you've liked it and you will continue to support us with all your love and all your likes. Do keep subscribing to us, hit the bell icon, and we meet you very soon. This is Kiran Mohan signing off from the sets of Chaibrary.